Good evening, everyone. So in the last session, we completed questions based on life cycle costing, target costing. Now let us understand theory of constraints, which is related to your key factor concept. Z plus security. Question number 5, I'm talking about on page number 4.61. Question number 5. Z plus Security ZPS manufactures surveillance camera equipment that is sold to various office establishments. The firm also installs the equipment at the client's place to ensure that it works properly. Each camera is sold for 2,500. So 2,500 is the selling price. And the direct material cost is 1,000 for each camera, which is the only variable cost. So 2,500 is a selling price, 1,000 is variable cost. That means 1,500 is a contribution earned from each unit of camera. All other costs are fixed. Below is the information for manufacturing and installation of this equipment. Read it carefully. Annual capacity. Production capacity is 750, but installation capacity is only 500. That means even if you want, you cannot produce 750 because you will be able to install only 500. So 250 will be in stock and there will be a carrying cost. And that is the reason why the actual production is 500 and installation is also 500. So if you analyze this, there is a constraint, and the constraint is not manufacture. The constraint is not a manufacture. The constraint is installation. Identify the bottleneck in the operation style that ZPS should focus on improving. Give reasoning for your answer. We discussed that. What is bottleneck? Bottleneck is installation. So write down point number 1. I'll dictate this. Write down. Even if production capacity is 750 units, 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 only 500 cameras can be installed. Only 500 cameras can be installed. And therefore, the real bottleneck activity, and therefore, the real bottleneck activity, and therefore, the real bottleneck activity is installation. And therefore, the real bottleneck activity is installation. And therefore, the real bottleneck activity is installation. And therefore, ZPS should focus on, and therefore, ZPS should focus on improving the installation process. ZPS must focus on improving the installation process. Clear? Second, an improvement
in the installation technique could increase number of installation to 550 camera units. So instead of 500, you will now be able to install 550 units. This would involve additional expenditure of 40,000. So that improvement of capacity will take 40,000 as additional cost. Advise ZPS whether they should implement this technique. See, I will implement the technique only if it is profitable to me. I'm not interested in knowing anything else. If there is anything profitable, I would go for it. If there is no profit, I'm not going to go for it. So guys, we can go for the next calculation. For point number 2, we will have to prepare statement of profit. To be more precise, it will be statement of contribution, because your regular fixed cost will not be affected. And you guys already know, if your regular fixed cost is not getting affected, that means your contribution and profit both are going to be same. Now, if you produce additional units, there will be additional contribution. If you produce additional units, there will be additional contribution. 50 units you are producing more. And as per the question, 1,500 per unit is the contribution. I hope you recollect this part. 2,500 was your selling price and 1,000 was your material cost, which was the total variable cost. So 1,500 per unit is the contribution of each camera. So when I sell 50 extra units, I will be able to generate additional contribution of rupees 75,000. From that, additional cost of installation needs to be subtracted, which is 40,000. So 35,000 is the profit, or I would say net additional contribution. Net additional contribution. So what is the last part of the question? Advise whether it should be implemented. Yes. So copy this. Kindly copy this second part. अच्छा, तुम लोग का ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप है ना? नहीं, बहुत सारे नहीं चाहिए अपने को. तुम लोग के बैच का अगर ग्रुप है तो स्नेहा, एक आपका वीडियो ऑन है इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूं मैं. वो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था ना, उसका फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल दीजिए. ग्रुप में एक्सेस नहीं है. आई एम नॉट इन एनी ग्रुप सर. कर लेना चाहिए ना ऐसे भी कभी कभी. अच्छा, कोई है ग्रुप में? दिशा, मलिका. अच्छा, जो लोग डाल सकते हैं वो डालो. जिस किसी ग्रुप पे जाना है जाने दो. डबल हो गया तो डबल. बट पॉइंट नंबर 1 क्लिक करके
दिशा, आई नो द ग्रुप, ओके, तो दिशा का ग्रुप शायद मुझे पता है, अंधेरी वाला अपना, सो यू कैन डू इट। बाकी लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप पे कोई एक इनिशिएटिव लेके डाल दो, पॉइंट नंबर 1। एनी टाइम करण। अच्छा, ये आपने लिख दिया। नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन, कंक्लूजन। कंक्लूजन। ZPS should implement. ZPS should implement. Should implement. ZPS should implement the process of improving installation capacity. The process of improving installation capacity. The process of improving installation capacity, as there is an additional profit. As there is an additional profit of rupees 35,000. As there is an additional profit of rupees 35,000. As there is an additional profit of 35,000. If it is done so. If it is done so. So that was point number 2. Point number 3. Engineers have identified ways to improve manufacturing technique that would increase production by 150 camera units. This would involve a cost of 100 rupees per camera due to necessary changes to be made in direct material. Advise ZPS whether they should implement this new technique. बोलिए। Engineers have identified ways to improve manufacturing technique that would increase production by 150 camera. Tell me, what is your opinion? Tell me. अरे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपना है 750, इसको और 150 से इंक्रीज करके फायदा क्या है जब मैं इंस्टॉल ही नहीं कर पाऊंगा। सो द कंस्ट्रेंट इज इंस्टॉलेशन। तो अभी आपको समझ में आया, आपका पूरा डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रेंट के हिसाब से चलेगा, बाकी किसी और बेसिस पे नहीं। सो राइट ऑन अ नोट, पॉइंट नंबर 3। Since installation is a constraint, since installation is a constraint, even additional quantity of 150 units, even additional quantity of 150 units, since installation is a constraint, even additional quantity of 150 units will not be sold
which will increase the stock unnecessarily, which will increase the stock unnecessarily, which will increase the stock unnecessarily, which will increase the stock unnecessarily. And therefore, ZPS should not implement, and therefore, ZPS should not implement, ZPS should not implement, ZPS should not implement the new technique of increasing productivity, the new technique of increasing productivity. तीजा क्या था वो आपका डाउट समझा नहीं मुझे. इंस्टॉलेशन आई डोंट नो द बॉटलनेक मतलब. दिशा ये लास्ट पॉइंट भी नोट्स जो लोग पिक निकाल के ग्रुप पे डाल रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट नंबर 3 पे डाल देना ग्रुप पे. हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद दिलाएगा. अरे रे प्लीज, इट्स ओके, सॉरी वॉरी क्या चीज होती है, इट्स ओके. क्वेश्चन नंबर 6 ये तुम लोग को याद दिलाएगा तुम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग का. क्वेश्चन नंबर 6. ये था क्वेश्चन नंबर 5, पेज 4.61. अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, पेज 4.72. आज का कॉस्टिंग पेपर देखा? Major paper was from our syllabus, textbook to textbook. Major paper. Chalo, question number 6. Z produces two types of products, Z and D, as its manufacturing plant. Both the products are produced using the same material, machinery, and skilled labor. Machine hours available for the year are 4,000. अपने पास 4,000 hours है to execute the work. So machine hours 4,000. Selling price ZD, material cost ZD, hours per unit ZD, maximum demand 2,000 and 1,600 for ZD, online booking already accepted for 400 and 1,200. Okay. 2,000 units if I try to produce at the rate of 1.6, I will have to use machine for 3,200 hours to produce Z, and 1,600 units at the rate of 0.8 hours per unit. Will cost me, will require 1,280 hours. So around 4,480 machine hours are required to carry on the production. But we have only 4,000. That means machine hours is a key factor. Not material, not labor. Machine hours is a key factor. Due to poor production
due to poor productivity level, late orders, and declining profit over recent years, the CEO has suggested the introduction of throughput accounting in the company. The total of factory cost is 1 crore 42 lakhs 60,000, excluding material. Okay. Using throughput accounting, prepare a statement to determine optimum production mix and maximum profit for the next year. Now, optimum production mix, optimum combination of Z and D is not a maximum. Optimum means the combination that will maximize profit of the company. Since machine hours is a key factor, we need ranking part to be handled first. We will have to decide whether Z is profitable or whether D is profitable, because accordingly, we'll decide which product to be given the first priority. Because if I want to go for only 4,000 hours, I will use 4,000 hours in such a manner that my highly profitable product will be produced first. And then if time permits, I'll go for the second profitable product. And if I do that, trust me, my profit has to be maximum. So, write down a note. Total hours required. Total hours required. Z and D. Z and D. 2000, 1600. 2000 and 1600. 1.6 and 0.8. Hours per unit. So 3200, 1280, the total requirement is 4480. Right on the next slide. Right on the next line. Since total machine hours available, since total machine hours available are only 4,000, since total machine hours available are only 4,000, machine hours will be considered as limiting factor. Machine hours will be considered as bottleneck activity. You can write this way. Machine hours can be considered as bottleneck activity. Machine hours can be considered as bottleneck activity. And therefore,
And therefore, we must use, and therefore, we must use machinars in such a manner. We must use machinars in such a manner that the highly profitable product, that the highly profitable product must be produced first. That the highly profitable product must be produced first. That the highly profitable product must be produced first. And the second profitable product can be produced during the spare time left. During the spare time left. So how will you decide the profitable product? We'll go for statement of ranking. We have Z as well as D. We have Z as well as D. How much is the selling price? 16,000, 4,000. 16,000, 4,000 minus variable cost per unit 7,000 and 1,200. So 9,000 and 2,800 is contribution, but here it will be called as throughput per unit. It is called as throughput per unit. I'm not interested in knowing per unit contribution. I will divide this by number of machine hours per unit, and that is 1.6 and 0.8. This indicates that if you work for 1.6 hours, you can produce 1 unit, and that 1 unit can give you 9,000. So ideally, 9,000 divided by 1.6, 5625 is my contribution, or I would say throughput per machine hour per unit of key factor. And 2,800 you're getting from 1 unit. 1 unit takes hardly 0.8 hours. So actually it is 3,500. Well, as far as ranking is concerned, you can directly go for this ranking as 1 and 2. If not, you can also go for throughput accounting ratio. If you go for throughput accounting ratio, you can actually compare throughput per hour with factory cost per hour. I'll give you a note on that. First of all, you copy this part. Statement of ranking.
Done? Write on the next line. Shall I proceed, bachcha log? Please write on the next line. Ranking can also be done. Ranking can also be done. Ranking can also be done on the basis of throughput accounting ratio. Throughput accounting ratio. Throughput accounting ratio, which can be calculated as follows. Which can be calculated as follows. 14260. 1 crore 42 lakh 60,000 is your total factory cost of 4,000 machine hours. 14260 divided by 4,000. 14260 divided by 4,000. So that comes to 3565. So TA ratio for Z and for D can be directly calculated now. How much is contribution of or throughput per machine hour? 5625. 5625 upon 3565, and here 3,500 less than upon 3565. 5625 divided by 3565. 1.58. 1.58 and 3,500 upon 3565. 0.98. So again, on the basis of this, if you try to decide ranking, it will be Z first, followed by D. जो रैंकिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, वही रैंकिंग उधर भी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, पर आर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So your final answer remains same. Have you copied the ranking part? Array, is this done? Okay. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. मुझे पता चला है Z मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फॉलोड बाय D. तो आई विल यूटिलाइज 4,000 machine hours in such a manner that entire quantity of Z which can be sold in the market will be produced. Entire demand of Z must be fulfilled first. So demand of Z is 2,000. Demand of Z is 2,000. My requirement is 1.6 hours. 3,200 hours मेरे पास पहले से है. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें. I have already accepted orders for Z and D. मतलब 400 units of Z and 1,200 units of D must be produced. I don't have an option.
So we'll do one thing. We'll allot 4,000 hours first to these to the production of these units. 400 of Z and 1200 of 400 of Z and 1200 of D. So here I am going for statement of optimum mix. The format is very simple. I'm going for Z online 400. 1.6 hours will be required for each unit. 640 hours will be utilized. Then I'll go for D online. I know I'm not supposed to go for D before I complete the demand for Z, but then order ले चुके हो तो ऑप्शन नहीं है आपके पास. 1200 का ऑर्डर लिया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए 960 आवर्स तो अलोकेट करने ही पड़ेंगे. And this will be out of 4,000 hours. So 4,000 hours minus 640 minus 960, 2,400 आवर्स आपके पास अभी भी बचेंगे. देखो अब मेरे पास 2,400 आवर्स बचे. I will first utilize that for the most successful product of mine, and that is Z. And that is Z. पर 2,400 hours में at the rate of 1.6 hours per unit, सिर्फ 1,500 यूनिट्स बन सकते हैं. ठीक है, तो 400 जिसका ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है, 1,500 जो हम लोग मार्केट में सीधा उतार देंगे. 1,900 यूनिट्स ऑफ जेड बनेंगे. 1,900 यूनिट्स ऑफ जेड बनेंगे एंड 1,200 यूनिट्स ऑफ डी बनेंगे. मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर ये ऑनलाइन ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया होता ना, तो सबसे पहले तो मैं 2,000 यूनिट जेड के बना लेता बाय स्पेंडिंग 1.6 आवर्स ऑन ईच यूनिट. तो 3,200 घंटे तो उधर जाते. बाकी का जो 800 घंटा बचेगा, 800 आवर्स बचेगा, आई वुड हैव यूटिलाइज 800 फॉर प्रोड्यूसिंग डी. पर since we have already accepted a demand, we had to fulfill demand of 400 and 1,200. Kindly copy this.
इज इट डन? प्लीज टाइप करो, हाँ, मतलब चैट बॉक्स में बोल दो डन, तो मैं, नहीं तो तुम लोग भी बैठे रहोगे, मैं भी बैठा रहूंगा। चलो। सो मांगा क्या है क्वेश्चन में? मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट भी मांगा है। ओके, तो इधर बना देते। Statement of profit, which is definitely going to be your maximum profit. Statement of profit, which is going to be your maximum profit. Hmm. We'll first go for total contribution. Okay. तो Z के पहले 400 एंड देन 1500। पहले 400 जिसका ऑर्डर मिल चुका है, फिर 1500, यानी कि 1900 यूनिट्स ऑफ Z यू आर प्रोड्यूसिंग। एंड D के 1200 यूनिट्स। D के 1200 यूनिट्स। Contribution per unit 9,2800, 9,2800 per unit। $171 lakhs। $33,60,000। So 2 crores 4,60,000 is your total contribution। अब इसमें से माइनस होगी फिक्स कॉस्ट 142.60। और उन्होंने क्लियरली बोला है दिस डज नॉट इंक्लूड मटेरियल कॉस्ट, तो नेचुरली मटेरियल कॉस्ट है नहीं, तो उसका मतलब फिक्स कॉस्ट ही बचेगा इसमें। And the balancing figure will be profit। 204.6 minus 142.6, 62 lakhs का तो प्रॉफिट आ रहा है। Have you understood this? So this is your maximum profit 62 lakhs। आपने टाइम इस तरह से यूज किया है कि आपका हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैज यूटिलाइज मेजर टाइम। योर हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैज यूटिलाइज मेजर टाइम। So naturally, if your highly profitable product has utilized the major time, that means your profit will also be maximized। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था आपको अगर आप वो ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते,
क्योंकि आपने ऑनलाइन ऑर्डर अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको किसी भी हालत में वो 1200 यूनिट बनाने पड़े डी के, वरना मेरे मन में तो डी था ही नहीं। आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग डी। ठीक है, so that was your first part. Point number one. Using throughput accounting, prepare a statement to determine optimum production mix and maximum profit for the next year. Calculate the amount of profit lost due to acceptance of online booking for the product. हम लोग जो हम लोगों ने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था वही पूछ रहे हैं लोग। हाउ मच इज द प्रॉफिट लॉस? डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉफिट लॉस। तुम लोग जबरदस्ती अगर डी को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो जेड के, तो डेफिनेटली देयर इज सम लॉस। आपने ऑर्डर पहले एक्सेप्ट किया है, उसके बाद आपने ये कैलकुलेशन किया है, and that is why it cannot be changed. You have already accepted the offer, then the calculation has been made, and that is why we are solving this question like this. Is this clear? Next year का पूछा नहीं है, so stop thinking about next year. Next year का पूछा नहीं है, so we are not supposed to think about next year. You are calculating everything which is based on the data which has happened in past. They asked you to find out how much is the profit earned, 62 lakhs. Now they are saying how much is the profit lost. So that has to be done from the current year's data only. Why to focus on next year? They must be interested in doing some planning for the next year. That's what the question says. That doesn't mean we are supposed to think about the future. Is this clear? Yeah, go ahead. हाँ, अरे बाबा, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया विच कैनॉट बी चेंज्ड, मतलब उसका प्रोडक्शन पहले करना पड़ेगा। इफ यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब अब आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसको चेंज करो। So that is the reason why they have asked us to go for optimum production mix and maximum profit for the year. So maximum profit for the year will be after fulfilling these two requirements of the offers which are already accepted, beta. Yeah, the upcoming period, see, the data is picked up from the previous information, but we are planning for the next year. And even if you consider this to be the budgeted data for the next year, doesn't matter. Your budgeted data is an outcome of actual data only. Why getting confused with all these things? You understood this, keep it minimum. Don't overthink. Costing and FM, both are such subjects where you're not supposed to overthink. This is a data available. Just because we have accepted some offers, our profit is this. Point number two is asking you, are we losing some profit?
Definitely we are losing some profit since we have produced D unnecessarily without fulfilling demand of Z. Definitely there is a time profit lost. Write down. I'll dictate a note, then we'll copy this. Write down. Due to online offer, company had to produce D. Company had to produce D. Without fulfilling demand of. Without fulfilling demand of. Without fulfilling demand of product Z. Full stop. If there was no online offer accepted, following would have been the profitability. Following would have been the optimum mix. 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 And the potential profit. Following would have been the optimum mix and potential profit. So my first priority, Z. Maximum demand, 2000. 1.6 hours are required. At the rate of 1.6 hours out of 4,000 hours, 3,200 hours will be utilized for Z. I am left with 800 hours. 800 hours will be utilized for D. And 800 hours, if I talk about, D requires 0.8 hours for each unit. So 0.8 hours per unit will be 1,000. So ideally, I should have produced 2,000 units of Z and 1,000 units of D. So my potential profit will be calculated exactly in the same manner. सिर्फ quantity बदलेगी. 2,000 and 1,000. Okay, 2,000 and 1,000 per unit. 9,000 and 2,800. 9,000 and 2,800 per unit. So 1 crore 80 lakhs and 28 lakhs. So 2 crores 80 lakhs would have been 2 crores 8 lakhs would have been my contribution against the fixed cost of 1 crore 52 lakh 60,000.
65,40,000 ये प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हुआ कितना? 62 lakhs. सो नेक्स्ट लाइन पे, therefore loss of profit will be 3,40,000. Loss of profit will be 3,40,000. Copy this. Okay. Now, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है तो एक डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हो सकता है. There can be a direct calculation possible. Statement of net contribution lost. ध्यान से सुनना, मेरे फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं हुआ है. मेरे फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं हुआ है. तो व्हाई शुड आई कंसिडर फिक्स कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग? मेरा कैलकुलेशन एकदम सिंपल है. आई प्रोड्यूस्ड 1900 ऑफ जेड, जो मैं 2000 बना सकता था. 1900 ऑफ जेड मैं बना के बैठा हूं जहां पे 2000 बना सकता. सो आई हैव लॉस्ट 100 यूनिट्स देयर. लेकिन डी के 1000 के बदले 1200 बन गए. सो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट किसका? जेड का. कितना? 2000 के बदले 1900 यूनिट्स बनाते हो, 100 यूनिट्स का नुकसान, 9000 पर यूनिट उसका कंट्रीब्यूशन था. तो सीधा 9 लाख से प्रॉफिट इज गोइंग डाउन. पर कैसा है, थोड़ा एडिशनल कंट्रीब्यूशन अर्न भी किया हमने, क्योंकि डी का 1000 बनने वाला था, हमने बना दिया 1200. तो डी का जो 200 यूनिट ज्यादा निकला, वो मुझे 2800 के रेट से 5,60,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दे रहा है. I lost 100 units of Z, which cost me contribution of 9 lakhs. I produced extra 200 units of D, which will give me 5,60,000 extra. So 3,40,000 is my net contribution lost. हम लोग ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हो. जो दिमाग में स्ट्राइक होता है दैट इज इंपॉर्टेंट. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए. कॉपी कर लो. दिस इज एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन.
Done? Sure. Okay. So that was your second part. Calculate the amount of profit lost. Now recommend options to be followed in order to avoid any loss of profit. क्या करोगे? You want to increase the, you want to eliminate that loss of profit. क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं आपके पास? सेलिंग प्राइस बढ़ाना, कॉमन है, प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, फिक्स कॉस्ट कम कर दो, मटेरियल कॉस्ट कम कर दो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। फोर्स अपने सबके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो सकती है, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो सकती है, पर हमको सिर्फ सजेस्ट करने को बोला, इंप्लीमेंट करने को नहीं। तो सजेस्ट तो करके आ ही सकते आप। देखो, आपसे कोई सलाह मांगता है तो आप सिर्फ सलाह देते हो, कॉन्सिक्वेंसेस का टेंशन आपको क्यों है? आपसे सिर्फ पूछा है रिकमेंड ऑप्शंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक ऑप्शन है सेलिंग प्राइस कम करूं। देखो, मेरा डी तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, आई मीन मेरा जेड तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है डी का ना। तो डी की सेलिंग प्राइस बढ़ा देता हूं मैं। हाँ, एक नोट लिख देने का, दैट इट द डिमांड में फॉल कर, पर दैट्स फाइन। डिसकंटिन्यू करोगे तो नुकसान है प्रतीक। अरे डी नल्ला थोड़ी है यार, डी भी तो प्रॉफिट दे रहा है ना अपने को, ऐसा क्या कर रहा है? करंट सिनारियो में डी इज गिविंग यू प्रॉफिट ऑफ 33,60,000, नल्ला थोड़ी है यार। So write down point number 3. Steps to be taken. Point number 3. Steps to be taken in order to avoid loss of profit. Point number 1. Selling price can be increased. Point number 1. Selling price can be increased. Selling price can be increased. Selling price can be increased in order to enhance the revenue. In order to enhance the revenue. But this may lead to, but this may lead to, but
This may lead to reduction in demand. This may lead to reduction in demand. Second, reduction in material cost. Reduction in material cost. Reduction in material cost without impairing quality of the product. 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 Point number 3. In order to tackle bottleneck, in order to tackle bottleneck, capacity of machiners must be increased, must be enhanced. Capacity of machiners must be enhanced. Capacity of machiners may be enhanced, which will lead to additional fixed cost. Which will lead to additional fixed cost. कोई भी कैपेसिटी तुम लोग एनहांस करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो आएगी. कोई भी कैपेसिटी तुम लोग एक्सटेंड करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो आएगी. तो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं, साथ में ड्रॉबैक भी बता रहा हूं. सेकंड में सिर्फ ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट हम लोग कम कर रहे हैं विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी. लेकिन पहले में डिमांड कम हो सकता है, दूसरे में तीसरे में एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग सकती है. तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखो, अगर मुझे कैपेसिटी नहीं बढ़ानी तो मैं सेम टाइम में ज्यादा यूनिट्स बना सकता हूं. दैट मींस आई हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. पॉसिबल है ना? पॉइंट नंबर 4. If increase in capacity is not possible, if increase in capacity is not possible, if increase in capacity is not possible, efficiency of workers can be increased. Efficiency of workers can be increased. Efficiency of workers can be increased. Efficiency of workers can be increased so that more output can be produced. So that more output can be produced in the same 4,000 hours. More output can be produced in the same 4,000 hours. More output can be produced in the same 4,000 hours. More output can be produced in the same 4,000 hours. There can be one more scenario. You can outsource product D if it is cheaper. Instead of spending on D in-house, if it is cheaper, you may think of outsourcing material D, product D, so that you can completely focus on product Z. So that can also be written as a 5th point. Point number 5. Point number 5.
Option of outsourcing product D. Option of outsourcing product D can also be implemented if it is cheaper in terms of cost structure. We can let out idle capacity. और 800 घंटे बचते हैं ना, तो 800 घंटे में 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, बाकी के जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो आउटसोर्स कर दूंगा। ऐसा क्या कर रहा है प्रतीक? मैंने ये थोड़ी कहा कि एंटायर एडी शुड बी आउटसोर्स्ड। जो शॉर्टफॉल है वो आउटसोर्स कर लो। 3200 आप जेड के लिए यूज करो, आपके पास 800 घंटा बचता है। 0.8 के हिसाब से 1000 यूनिट्स तो डी के बना ही सकते हो ना। डी का डिमांड कितना है? 1200, तो 200 बाय कर लो। सिंपल। गॉट इट प्रतीक? दैट ऑप्शन वी ऑलवेज हैव ना। ओनली सरप्लस टाइम, ओनली सरप्लस क्वांटिटी विल बी, और जिसका शॉर्टेज है, मुझे मेरे लिए शॉर्टेज जो है, दैट क्वांटिटी विल बी आउटसोर्स। So next part of this question is list various ways through which price customization should be done. अब ये पूरा थियरी पार्ट है, ध्यान से सुनो। ये ना डिटेल में प्राइसिंग में भी करवाऊंगा मैं। प्राइसिंग है अपने सिलेबस में, एक्सटर्नल प्राइसिंग। बट व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज, what are the different areas whereby what are the different areas which will be taken into consideration for pricing? एक तो आपके प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से आ सकता है, मतलब the product which you are producing, whether the product is having a huge demand, moderate demand, or slow moving. So that is one thing, product line. Second one is it will be based on customer's past behavior. कस्टमर ने, अगर कस्टमर को आपने लास्ट परचेस पे डिस्काउंट दिया तो कस्टमर आज भी वही एक्सपेक्ट करेगा। और अगर आपने उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया है लास्ट टाइम तो आज भी वो वही एक्सपेक्ट करेगा। इनफैक्ट उसकी वजह से वो आपके पास आया होगा। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज सेकेंड थिंग। समटाइम्स based on age and status of the customer also you can take different decisions. जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है तो थिएटर में डिस्काउंट मिलता है, मॉर्निंग शो, आई कार्ड दिखाओ और घुस जाओ। ट्रेन में कंसेशन मिलता है तुम लोग को फर्स्ट क्लास में। आई डोंट नो वेदर इट इज एप्लीकेबल अभी तक है कि नहीं, पहले तो मिलता था। हाँ, तो कॉलेज से लेटर वो फॉर्म भर के दे दो, सीधा 1/3 वगैरह कुछ मिलता है, और 1/3 यू हैव टू पे, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे प्राइसिंग का एयर टिकट्स पे मिलता है, आई डोंट नो। स्टूडेंट होगा तो एयर टिकट पे मिलता है। वेरी गुड। सीनियर सिटीजन हो तो रेलवे में मिलता है, एसटी में मिलता है, हाथ दाखवा एसटी थामवा। अच्छा, बैंगलोर वाले हो तो सारे औरतों को फ्री है ट्रैवलिंग, जो घर से बाहर नहीं निकलती वो भी 2-2 बार बाहर निकलती है, अभी बस में फ्री है इसलिए। देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन पीपल ट्रैवलिंग इन द बस, rather ladies traveling in the bus. So this is as per the age and status of the customer, and then it can be based on the period. मतलब कैसा है, लॉन्ग टर्म कस्टमर है तो आप प्राइस निगोशिएशन थोड़ा बर्दाश्त कर लोगे। शॉर्ट टर्म कस्टमर है तो आप प्राइस निगोशिएशन में इंटरेस्टेड नहीं, भाई ये प्राइस है इसमें लेना है तो लो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच।
लेकिन आपको लगता है कि ये बंदा मुझे और 4 लोग लाके देगा या यही बंदा मेरे पास हमेशा आएगा, तो डेफिनेटली योर प्राइस स्ट्रेटेजी विल बी डिफरेंट। तो मैं फटाफट फटाफट सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूं आपको। पॉइंट नंबर 4, राइट डाउन। प्राइस कस्टमाइजेशन price customization must be done. Price customization must be done price customization must be done on the basis of following factors. Price customization must be done on the basis of following factors. Point number 1. On the basis of the product line, on the basis of the product line, where customer specifications, where customer specifications or the demand will be given the priority, or the demand will be given the priority. जैसे टॉप एंड वर्जन लोगे तो सारे फीचर्स मिलते हैं, बेसिक वर्जन लोगे तो सारे फीचर्स नहीं मिलते, इसलिए प्राइस भी अलग होता है कार का। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। where top end version cars, where top end version cars, where top end version cars and basic version cars are available at different rate. Where top end version cars and basic cars are available at different rates. Clear? फीचर्स ज्यादा दे रहे हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन इट इज, कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा लेने का हक बनता है आपको, लूट लो। नेक्स्ट, सेकंड, past behavior of the customer can also be considered. Past behavior of the customers can also be considered for pricing decisions. For pricing decisions. For pricing decisions. For example, customers ordering frequently or customers having a good track record in terms of payment. Customers having a good track record in terms of payment. Customers having a good track record in terms of payment. Customers having a good track record in terms of payment can be given special discounts. Can be given special discounts. Next point. Pricing strategies can vary. Pricing strategies can vary. Pricing strategies can vary on the basis of
status of the customer. On the basis of status of the customer. For example, concessional selling price for students, concessional selling price for students, comma, senior citizens, comma, customers from special services, customers from special services like Army, Navy, Air Force. होता है, काफी जगह पे होता है. Customers from special services, that is Army, Navy, and Air Force. Next point. Longevity of the customer also plays a vital role. Longevity of the customer also plays a vital role. In terms of pricing decisions. Where the benefit is enjoyed for a longer period of time, where the benefit is enjoyed for a longer period of time, a discounted price can be charged to such customers. A discounted price can be charged to such customers. For example, annual subscription of DTH, annual subscription of DTH, comma, broadbands, comma, fitness centers, etc. ओ टाटा स्काई का ऐड देखा ना, 12 पे दे रहा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 महीने का फ्री, 6 महीने का लोगे तो हाफ मंथ का फ्री. So your broadband services must also be providing such services to you. पूरे साल का भरो, डिस्काउंट मिलेगा. तीसरा क्या लिखवाया मैंने? अरे एक लिखवाया मैंने तुम लोगों को ब्रॉडबैंड, दूसरा DTH, डायरेक्ट टू होम. और क्या लिखवाया है? फिटनेस सेंटर्स, जिम, हेल्थ क्लब. पूरे साल का भरो 12,000, हर महीना भरोगे तो 1,500 देना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ 18,000 हम 12,000 ले रहे आपसे. अब वो भी जानते हैं कि 100 लोग जब पैसा भरते जिम में, उसमें से 20 लोग भी फ्लोर पे नहीं आते साल भर कंसिस्टेंटली. पर हमको दिखता है डिस्काउंट, 18,000 का माल 12,000 में हम भर देते हैं 12,000. व्हाट इज इट? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ओनली. नो, पूरे साल का पैसा एक झटके में. तो ठीक है, 18,000 के लिए मुझे 1,500 हर महीना तेरे पास रुकना पड़ेगा. मुझे पता है तू एक महीने में झट करके 12,000 भरेगा और उसके बाद दिखेगा नहीं. मुझे तो वही चाहिए. मुझे तुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरे को पैसा जो है, पैसा पैसा आपने तो पैसा जो है, पैसा आ गया, मेरा काम हो गया यार. तुम लोग खुश, तुम लोग को दिखता है डिस्काउंट 50%. अरे वाह, कम 6,000 कम कर दिया, 1/3 डिस्काउंट मिला. तुम लोग का पूरा 12,000 वेस्ट हो सकता है इफ यू डोंट यूटिलाइज सर्विसेज. स्पेशल फीचर्स, स्पेशल प्राइसिंग.
समझ में आया? एक और नोट लिख लेना, अपार्ट फ्रॉम the above strategies, there can be few more economical and legal factors. There can be few more economical and legal factors. There are few more economical and legal factors which can also be taken into consideration, which can also be taken into consideration while selecting pricing, while selecting pricing strategy, while selecting pricing strategy, while selecting pricing strategy. समझे? मतलब जैसे कंपटीशन एक्ट है, एक सर्टेन लेवल के नीचे तुम लोग सेलिंग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते अगर, तो वो और वो सारे फैक्टर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे, प्लस योर इकोनॉमिक्स, गणित जो है तुम लोग का खुद का बिजनेस का, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा. So these are the points which are responsible for price customization. And the last part, given that products Z and D, given that products Z and D are respectively in maturity stage and introduction stage, मतलब Z का दुकान बंद होने पे है और D तो अभी ग्रो हो रहा है. State the most appropriate pricing policy that should be followed for Z and D as per life cycle. अब Z का मैच्योरिटी है तो क्या करोगे? मैच्योरिटी स्टेज है मतलब तुम लोग प्राइस इंक्रीज करने के ताकत तो नहीं रखते. Rivals have already entered into the market. They have already captured your business. I mean, they have already started capturing your business. Your market share is going down. तो क्या करोगे? Price reduction is the only option. आपको मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो आपको प्राइस रिडक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कंपटीशन को बीट करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेलिंग प्राइस या तो कांस्टेंट रखूं या तो कम करूं. और अगर सेलिंग प्राइस कम नहीं करनी तो कंसेशनल ऑफर्स दे दूं थोड़ा इधर उधर का, या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स दे दूं विच विल कॉस्ट मी ओनली द वेरिएबल कॉस्ट. जैसे आफ्टर सेल सर्विस मैंने दे दिया जिसका मैं चार्ज नहीं करूंगा, सिर्फ मटेरियल चार्ज करूंगा, लेबर चार्ज नहीं करूंगा. तो लेबर वैसे भी काहे से चार्ज होगा? देखो, मैं हूं मारुति सुजुकी, आप सर्विसिंग के लिए गाड़ी मेरे पास छोड़ोगे. अब मेरे पास जितने भी मैकेनिक्स काम करते हैं मेरे वर्कशॉप में, सपोज देयर आर 25 मैकेनिक्स, they are paid on monthly basis. I charge you material plus labor as job cost. तो मैं आपको बोलूंगा ठीक है, आप एक काम करो, आप गाड़ी खरीद लो, आपका लेबर में 4-5 साल के लिए फ्री कर देता हूं. फ्री मतलब क्या? मैं चार्ज नहीं करूंगा, मैं इनकर भी नहीं कर रहा हूं. सो इट इज नॉट अ लॉस फॉर मी. सैलरी तो वैसे भी देनी थी, तो देर इज नो रेलेवेंट कॉस्ट, नो, और देर इज नो रेलेवेंट लॉस ऑल्सो. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रेटेजी. जो खर्चा मेरा वैसे भी होने वाला है, जो खर्चा मेरा वैसे भी होने वाला है, वही तुम लोग को मैं कमिट करके दे रहा हूं. सो आई एम नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. तुम लोग ना बोलोगे तो भी वो खर्चा तो होने ही वाला है मेरा, और तुम लोग हाँ बोलोगे तो भी मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है नहीं. आई होप यू गाइज आर क्लियर. सो मैच्योरिटी, डी का क्या करोगे? इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन मतलब एक ही ऑप्शन है, पेनिट्रेशन या फिर स्किमिंग, दोनों में से एक. करेक्ट. चलो दोनों का नोट क्विकली लिखवा देता हूं, राइट डाउन.
Product Z, which is going through a maturity phase. Product Z, which is going through a maturity phase. Must be having a saturated sales. Must be having a saturated sales. Must be having saturated sales, which is an outcome of stiff competition. Due to stiff competition. And therefore, selling price cannot be increased. And therefore, selling price cannot be increased in any situation, in this situation. And therefore, selling price cannot be increased in this situation. Some offers can be given to the customer. Some offers can be given to the customer, like concessional after sale service, like concessional after sale service, comma, extended warranty, concessional after sale service, comma, extended warranty, comma, buyback of the product at a reasonable price, buyback of the product at a reasonable price, buyback of the product at a reasonable price in order to maintain the sales. In order to maintain the sales. You understood the third one? You're buying my product, I'm giving you guarantee कि ठीक है आज तुम लोग 5,000 में ले रहे हो, 3 साल बाद मैं इसे 5,000 में खरीद लूंगा वापस, आप टेंशन मत लो. This generally happens in case of jewelry, diamond jewelry. आज जिस प्राइस पे आपने डायमंड लिया है, आगे कितने भी प्राइस हो, बड़े कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डायमंड का सेम प्राइस मिलता है. सो इफ यू हैव इनकर्ड 50,000 ऑन डायमंड, 50,000 तो आपको बाकी मिलेगा, बाकी गोल्ड तो उस टाइम पे जो रेट चल रहा है वो, विच इज जनरली हाई. तो अगर आपने सपोज रिंग ले ली जिसमें 50,000 का गोल्ड है और अराउंड 35,000 के डायमंड्स है, अमेरिकन डायमंड नहीं है, चिंदी चोर, एक्चुअल डायमंड्स, 50,000 का गोल्ड, 30,000 का डायमंड्स, तो ये 30,000 आपको 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी 30,000 वापस देगा. इट डजंट मैटर व्हाट इज द प्राइस आफ्टर 10 years और whether it is more or less. वो 30,000 का डायमंड का प्राइस 3 लाख हो गया तो भी आपको 30,000 मिलेगा, और 30,000 का डायमंड अगर 300 रुपया हो गया तो भी आपको 30,000 मिलेगा. और गोल्ड का भाव अगर तभी 70,000 है तो 70,000 के भाव से मिलेगा, तभी अगर 40,000 हो गया तो 40,000 के भाव से. So buyback offers can also extend the life of the product. I hope you are clear with it. Next line, same point, next line. Since D is at introduction stage, since D is at introduction stage, since D is at introduction stage, penetration pricing can be implemented. Penetration pricing can be implemented. In order to attract the customer. In order to attract the customer. In order to attract the customer.
provided there is a large scale production, there is a large scale production, there is a large scale production, comma, there is a large scale production, comma, huge demand for the product, and the manufacturer has control over the cost structure. And the manufacturer has control over the cost structure. क्योंकि cost पे control नहीं होगा तो profit margin बहुत कम होगी आपके लिए. Penetration pricing मतलब minimum pricing. Minimum pricing मतलब you don't have much gap. तो अगर गलती से आपकी cost ज्यादा हो गई तो आप गए काम से. Have you understood all these points? अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो. या चलो. So ये 3 points हो गए penetration pricing के लिए. Next line. If product D has some special feature, if product D has some special feature, skimming pricing strategy, skimming लिखा है स्क्रीन पे, skimming pricing strategy can be implemented. Skimming pricing strategy can be implemented so that the massive R&D cost, so that the massive R&D cost and the massive R&D cost and promotional cost, the massive R&D cost and promotional cost can be recovered at earliest. Can be recovered at earliest. This can be implemented. This can be implemented. This can be implemented. This can be implemented when there is no competition. When there is no competition. This can be implemented when there is no competition. सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे दिए तुम लोग को शॉर्ट करके. यही लिखना नोट्स में, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. जो भी मार्क्स मिलने के लिए जरूरी है वो मैंने लिखवा दिया है. अच्छा, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है. तो साइमल्टेनियसली वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर एमसीक्यूज आल्सो. जैसे एक पॉइंट पूछा, स्किमिंग कब यूज कर सकते हो, तो नो कंपटीशन, ये कैन दिस कैन बी एमसीक्यू. पेनिट्रेशन प्राइसिंग कब यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ एमसीक्यू. तो 3 पॉइंट मैंने दिए देंगे और चौथा अपना घुसेड़ेंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पेनिट्रेशन प्राइसिंग. एमसीक्यूज किसी में से भी आ सकते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी पैदा हो सकते हैं. नरसिम्हा जैसा खंबे में से वगैरह कुछ भी हो सकता है इनका. और आईसीआई का तो कोई भरोसा नहीं.
सो वाई टू टेक रिस्क? इसलिए मैं पूरा स्टडी मटेरियल ही कवर कर रहा हूं। एक बार स्टडी मटेरियल कवर हो गया तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर का कुछ भी आएगा। ठीक है, चलो मुझे बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है? सो आई विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, बहुत कुछ हुआ है आज। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो
Welcome back. Question number 8. QR Limited is a leading manufacturer and exporter of high quality leather products. Product Q and product R. The selling price per unit of Q and R is 620 and 420 respectively. Both the product pass through 3 processes: tanning, dyeing, finishing. So there are 3 processes for 2 types of products. Look at the cost structure given. Material per unit, labor per unit. Total cost is 230. Are yes or no? Total cost is 230. Correct? This is 300. This is 230 again. Okay. So, how do we deal with it? हमको प्रोसेस वाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है, प्रोडक्ट वाइज बनाना पड़ेगा. Allocation for Q and R, 70%, 30%, 50%, 50%, 70%, 30%. General overheads per unit for Q or R is 115. एक यूनिट का 115, तो दोनों का मिलके 230 होगा. This rate is derived after division of total general overheads with number of leather products, be it Q or R. Above cost allocation is on the basis of the decisions regarding pricing of the product. In this industry, all the major production processes have environmental impact at all stages of process, including generation of waste, emission of harmful gases, noise pollution, water contamination, etc. The management of the company is worried about the above environmental impact and has taken initiative to preserve the environment, like research and development activities aimed at reducing the pollution level, planting trees, treatment of harmful gases, and airborne emission, water, wastewater treatment, etc. So basically, they have started processing the waste. Okay. The management of the company desires to adopt environmental management accounting as a part of strategic decision making. And the pricing of the product should also factor in the environmental cost generated by each product. General overhead, blanket rate per unit is 115, which includes treatment of harmful gases 40 rupees, water waste treatment 50, cost of planting trees 10, miscellaneous 15. The process-wise information related to generation of water, generation of wastewater and harmful gases is given below. 900 liters, 600 liters for wastewater generated, 400, 300, 100 for emission of harmful gases for 3 processes. And once you get the cost process-wise, you can split that as 70-30, 50-50 and 70-30 again. The remaining overhead cost and cost of planting trees can be allocated equally between product Q and R. Okay, calculate product-wise profitability based on original cost allocation. So how would you go about original cost allocation?
देखो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। आपको ना सबसे पहले ये सोचना है कि आप कर क्या रहे हो, व्हाट इज आस्क्ड। व्हाट इज आस्क्ड, प्रॉफिटेबिलिटी मांगा है ना। और कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी हो वो तो प्रोडक्ट वाइज ही होगी। What else they have asked in the first part, guys? Product wise profitability based on the original cost. Okay. So, statement of profit. This is point number one. Product Q and product R. Product Q and product R. Now, profit कैसे निकलता है? Revenue minus cost. I think selling prices are available 620 and 420. So, selling price 620, 420 दिया हुआ है। 620 and 420 दिया हुआ है। We will subtract the other cost structure. We will subtract the other cost structure. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, एंड आई थिंक वी हैव ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड का दिक्कत है नहीं, ओवरहेड तो 115 बोला है एज पर द एक्सिस्टिंग सिस्टम व्हेन वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल एंड ऑल दोस थिंग्स। So selling price will be marked as 1, or rather selling price will be marked as A, total cost will be marked as B, profit will be A minus B. Profit will be A minus B. ओके मतलब हमको किसी भी हालत में वो मटेरियल और लेबर ढूंढना है, वो अगर ढूंढ लिया है तो काम हो गया अपना। दिस विल बी फॉर डायरेक्ट मटेरियल, दिस विल बी फॉर डायरेक्ट लेबर। एम आई राइट? ठीक है, फिर डायरेक्ट मटेरियल, इनफैक्ट दोनों को साइमल्टेनियसली निकाल सकते हो तुम लोग। डोंट राइट एनीथिंग, आई विल गिव यू टाइम टू राइट। अच्छा, प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे कॉस्ट दी है प्रोसेस की, मुझे कॉस्ट दी है प्रोसेस की 140। आप समझ रहे हो? तो 140 आपका मटेरियल है, 90 आपका लेबर है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन 70-30 जाने वाला है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं 3 प्रोसेस का ना एक टेबल बना लेता हूं। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। देखो, मटेरियल और लेबर का अलोकेशन अगर अलग अलग होता ना, 70-30 के बदले मटेरियल 70-30, लेबर 60-40, तो मैं ये हरकत नहीं कर पाता, लेकिन अब कर सकता हूं। ध्यान से देखना अभी। आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या है? टैनिंग, डाइंग, फिनिशिंग। टैनिंग, डाइंग, फिनिशिंग। ओके।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ध्यान से सुनना, बराबर से देखना, बाद में कॉपी करना। 140, 180, 140, 140, 180, 140, ये आपका मटेरियल हुआ। 90, 20, 90, 90, 20, 90, दिस इज योर labor. So guys, it is 230, 200 and 230 if I'm not wrong. यहां तक समझा? ध्यान से सुनना अभी। प्रोडक्ट कौन से? PNQ, QNR। QNR का प्रपोर्शन क्या दिया है? Q cos to R। बॉस 70, 30, सो 230 का 70 एंड 30 ऐसा आएगा। आर यू गेटिंग मी? 230 का 161 चला जाएगा Q में एंड 69 विल बी चार्ज टू R। ये 200 का क्या बोला है? 50-50 बोला है। 200 का 50-50 बोला है ना, या 50-50 बोला है। सो 100, 100 और यहाँ पे वापस 161, 69। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ Q in terms of material and labor will be 161 plus 100 plus 161, 422 and 69, 69 plus 100, 238। आपको समझा मैंने किया क्या एग्जैक्टली exactly? अरे 120 है क्या? तो ये 120 होगा, तो ये एक मिनट, तो ये 300 होगा, 300 होगा तो 150, 150, चलो 161 इंटू 2 प्लस 150, तो ये आएगा 472 और 69 दो बार प्लस 150, तो ये डी है। अभी ठीक है? सो 472 एंड 288 माइनस कर लेता हूं इधर से। 472 and 288, how do you know working note 1? So 587 and 403, तो 17 रुपया प्रॉफिट। 620 माइनस 587, 33 प्रॉफिट। क्या मांगा है क्वेश्चन में? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर बोला है तो सिर्फ अमाउंट नहीं निकालने का, परसेंटेज निकालने का। एंड प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सेल्स पे होता है, बिकॉज प्रॉफिट इज एन आउटकम ऑफ सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी ऑन सेल्स, सो 33 डिवाइडेड बाय 620, 5.32 नहीं,
and 17 divided by 420. 4.05. चलो ये समझा है. Copy the first part. Quick. अरे is it done? Yes. So now copy working note 1. Process wise cost was converted into product wise cost. Is it done, बच्चा लोग? अरे ओ बछुआ, कोई गवा के नहीं. Yes. चलो. Now that was as per the first calculation. Now in the second part, they are asking us recalculate product-wise profitability based on activity-based costing. That means environmental-driven cost. मतलब बाबू, बाबू, 115 नहीं ले सकते अभी हर एक प्रोडक्ट के लिए. We cannot rely only on 115 बच्चा लोग, because they have split 115 into 4 parts. One is treatment of harmful gases, another one is wastewater, third one is planting of trees, and fourth one is miscellaneous. If 4 cost structures are different, they cannot be clubbed as 115, 115. इसका मतलब मटेरियल लेबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 115, 115 जो आराम से लिख के हम लोग बैठे थे, ये नहीं हो पाएगा. ये नहीं हो पाएगा. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो फॉर्मेट में थोड़ा चेंज. अभी देखो कॉलम सेम रहेंगे, रोज बदलेंगे. This is your second point.
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लिख देता हूं सीधा, प्रॉफिटेबिलिटी। इसके पहले वाले में भी लिख देना प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हम लोग ने परसेंटेज निकाल के छोड़ा है ना। व्हेनेवर दे आस्क फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इट इज ऑलवेज परसेंटेज। क्यू आर करके दो प्रोडक्ट्स है। एज यूजुअल सेलिंग प्राइस ऑन द फर्स्ट लाइन 620 420, 620 420 माइनस कॉस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मटेरियल एंड लेबर में ससुरा कौनो फर्क नहीं, शेम टू शेम। 472 288, 472 288 तो सेम रहेगा। लेकिन अब 115 का ओवरहेड माइनस नहीं होगा। 115 का ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप बहुत जरूरी है लाइफ में। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, ओके, गैसेस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट WWT। देन planting cost, miscellaneous cost. This will give you total cost structure like the previous calculation, A and B. Profit will be A minus B. Last line पे percentage of profit on sales. चलो यहाँ तक क्लियरली समझा है? कॉपी कर लो इसको। Keep the format ready. Keep the format ready. Done? अरे बाबा चलने चलने दिख रहा है। अरे थोड़ा जल्दी करने बाबा, खत्म करना आज। चलो, now all I need to know is allocation of 115. लास्ट टाइम हम लोग ने सीना तान के 115 माइनस कर दिया बिकॉज इट वाज एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, वी कुड डू दैट। नाउ 115 का ब्रेकअप हमको पता है। इसका मतलब द वे वी डिड हियर, same calculation is to be done. The small little problem here is I don't have process wise cost. I have total cost but not process wise cost. तो सबसे पहले ना I'll be going for working note 2 और मैं चारों कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को पहले प्रोसेस वाइज तोड़ लेता हूं। ध्यान से देखना। अरे अगर आपको टैनिंग की, डाइंग की और फिनिशिंग की टोटल कॉस्ट मिल गई तो 70-30 50-50 70-30 वापस कर सकते हो आप लोग। यस और नो? तुम जा रही इधर से? हाँ, ओके, ध्यान से देखना।
टैनिंग, डाइंग, फिनिशिंग। करेक्ट। आपकी पहली कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गैसेस, 40 रुपीज। अच्छा, सबसे पहली बात, ये 40 पर यूनिट है, 115 का ब्रेकअप है ये। अगर 115 और 180 दोनों होता है तो इट विल बी टेकन एज 80। सो ट्रीटमेंट ऑफ, अरे यार 115 का 230 का किया था ना हम लोगों ने। सो ट्रीटमेंट ऑफ गैस 40 प्लस 40, 40 प्लस 40, चलो इधर टोटल ले लेते हैं, 80। देन वेस्ट वाटर कितना रे, 50। पी का, क्यू का, सबका लेकर है वेस्ट वाटर कॉस्ट। प्लांटिंग ट्री, प्लांटिंग ट्री 10 एंड मिसलेनियस 15, 10 प्लस 10 20, मिसलेनियस 15 प्लस 15 30। लास्ट टाइम ना प्रोसेस वाइज कॉस्ट थी मेरे पास, तो ये सब कुछ करना नहीं पड़ा था, लेकिन अभी प्रोसेस वाइज कॉस्ट नहीं है, तो पहले प्रोसेस वाइज कॉस्ट ढूंढना। ट्रीटमेंट के लिए बेस दिया इन लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर, देख लो। वेस्ट वाटर के लिए 9:6, फिनिशिंग में आएगा डैश, 9:6। वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर 9:6, वेस्ट वाटर इज 9:6। तो ये आएगा 60, 40, फिनिशिंग को मिलेगा डैश। अच्छा, गैस का क्या सीन है, 4:3:1, 4:3:1, 4 3 7 1 8। हाँ तो सिंपल है, 40 30 10। चलो ये दो तो मिल गए। अरे ये समझा, अभी प्लांटिंग और ये तो 10-10 ही आएगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इट विल बी शेयर्ड इक्वली। ये देखो, they have given you basis only for these two, they have given you basis only for wastewater and emission, they have given you basis for wastewater and emission। इसका मतलब ये 20 डायरेक्टली 10-10 जा सकता है ना क्यूएनआर में, तो इस टेबल में जरूरत ही नहीं है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू नॉट टू राइट। ये 10, ये 10 और ये 15 और 15 डायरेक्टली जाएगा, हाउ डू यू नो, अरे इट्स गिवन। लेकिन इसके लिए हम बना रहे वर्किंग नोट 2। You understood this? So I'm not going to allocate this process wise। मेरे लिए टोटल होगी 100, 70 एंड 10।
और टोटल अगर 100, 70 एंड 10 होगी, टोटल अगर 100, 70 एंड 10 होगी, कॉस्ट ऑफ क्यू, कॉस्ट ऑफ आर, 70, 30, करेक्ट। 70, 30, ये 50 है ना, 50% है, तो ये 35, 35, और ये 7, 3, सो 70 प्लस 35 प्लस 7, 112, 65 प्लस 3, 68। अरे समझा? आपको समझा क्लासिफिकेशन? डबल क्यू किया, अरे पी और क्यू दोनों का आएगा ना। यू आर स्पेंडिंग 40 रुपीज ऑन आइदर क्यू और आर, तो क्यू के लिए भी 40, आर के लिए भी 40, तो टोटल तो 80 होगा प्रोसेस में, दोनों प्रोडक्ट बनाओगे तो। ये ले, क्यू आर, क्यू आर, लेकिन प्लांटिंग और मिसलेनियस का तो 10-10 अलग अलग ही आ रहा है, तो उसको प्रोसेस वाइज क्यों डालू मैं? मैंने डायरेक्टली इधर ही डाल दिया। 112 एंड 68, 112 एंड 68। अब इसका टोटल ले लो, अभी वेस्ट मत करो लिखने में, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बाद में कॉपी कर लो। 472, 112, ये आएगा 609, मतलब 11 का प्रॉफिट ऑन 620। माँ कसम 1.77% आ गया। और ये 288 प्लस 68 प्लस 25, 381 आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। 420 की सेलिंग प्राइस, 39 प्रॉफिट, 39 डिवाइडेड बाय 420, 9.29। ये समझा? कॉपी दिस, कॉपी दिस। अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी मत करो, अभी इतना टाइम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसका सॉल्यूशन पीछे पड़ा है, बट एकदम प्यार से दिया इन लोगों ने, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तुम लोग को वो पढ़ के। मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पढ़ा दिया, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। टोटल कॉस्ट को प्रोसेस वाइज तोड़ा, प्रोसेस वाइज मिलने के बाद, प्रोसेस वाइज मिलने के बाद 70, 30, 50, 50, 70, 30। ये तो डायरेक्टली दिया था, तो इसको कंसिडर किया नहीं मैंने, वो तो डायरेक्टली 10, 10, 15, 15 चला गया। तो प्रोसेस का खर्चा जो है वो वापस 70, 30, 50, 50 एंड आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 70, 30, समझ में आ जाएगा वैसे। 70, 30, 70, 30 एंड दिस इज 50, 50, करेक्ट? बस तो फिर हो गया। बाकी इसका जो लास्ट पार्ट है उसका तो सिर्फ थियरी है, बोल बच्चन है,
तुम लोग पढ़ लेना बाद में. Analyze the difference in profitability as per both the methods. No matter what you say, the most accurate will be the second one, because we have applied activity based costing, which is the most refined and the most accurate basis of charging cost to the customer. So that has to be clear. ये तुम लोग थियरी में से पढ़ सकते, नॉट अ बिग डील. बट ये सोल्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, अजीब तरीके से दिया था तो मैंने सॉल्व करवा दिया. सो दैट्स द एंड ऑफ द फोर्थ चैप्टर. बच्चा लोग, फोर्थ चैप्टर इज ओवर. तो कल मैं स्टार्ट करूंगा फिफ्थ वन, और फिफ्थ के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर चालू हो जाएंगे. डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्राइसिंग, एक्सटर्नल प्राइसिंग, तो और थोड़ा मजा आएगा उसमें. थियरी प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल. तो विल कंप्लीट द फर्स्ट मॉड्यूल soon, then and we'll take up the second one. Question number 7 theory, खुद से पढ़ लो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना. कुछ है ही नहीं दम. बाकी क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस अलग अलग दिए हैं, अजीब तरीके से दिए हैं, तो और बहुत वेग दिया है, तो मैंने प्रिसाइज आंसर दिया है. उतना ही पढ़ना है तुम लोगों को. क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क खुद ही पढ़ लेना, सिंपल इट इज. ओके बच्चा लोग, सो हैव अ नाइस टाइम. कल मिलते हैं आराम से. इसका स्टेटमेंट 1 दिखा दो ना सर. ओके ये लो. ऋषिकेश मिल गया क्या? गुड. सेकंड चाहिए, वर्किंग नोट 1. सब लेके जाएगा तू, सब लेके जाएगा. कर क्या रहा था बे? और कुछ? नोप्स. ओके चलो, हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय, सी यू टुमारो. कल मिल रहे हैं हम लोग. बाय बाय.